were introduced in early 20th century. और ये बहुत यूजफुल है टू मॉडल एनी is useful to model real world processes. For example, industrial processes. जैसे कोई मटेरियल किसी जगह पर फीड हो रहा है और वो प्रोसेस हो रहा है और फिर मजीद मटेरियल की रिक्वायरमेंट जनरेट हो रही है, तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को मॉडल करने के लिए यूज होती है। ये बहुत ही यूजफुल मॉडलिंग टेक्निक है, यूजफुल मॉडलिंग टेक्निक। और जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं कि हम जो मॉडलिंग टेक्निक्स उसमें पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल यानी स्पेसिफिक नहीं है, यूजफुल मॉडलिंग टेक्निक है और कैन बी अप्लाइड इन मैनी इंजीनियरिंग डोमेन्स। बहुत सारी इंजीनियरिंग डोमेन अप्लाई होती हैं। तो हमने जो भी टेक्निक्स इस कोर्स में पढ़ी हैं अभी तक, आपने देखा कि पॉलिटिकल स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि टेक्निक है। इसके नाम से लग रहा है कि ये एक नेट है। नेट मतलब एक नेटवर्क है और नेट का मतलब है ये एक नेटवर्क है। इस नेम है और नेट का मतलब ये है कि ये एक नेटवर्क। इसी वजह में ग्राफ्स के नेटवर्क्स बने हुए हैं, ऐसे करके कुछ नेटवर्क जिनमें कुछ वर्टिसेस। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि पैटर्न नेट्स क्या होते हैं और हम पैटर्न नेट्स की ये बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़ेंगे आज के लेक्चर में और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को एक्सटेंड करेंगे। और आज का प्लान ऐसे है कि हम जो 9 to 9:50 और 10 to 10:50 वाले लेक्चर में हम बेसिक्स। तो ये प्लान होगा आज का। मैं थोड़ा सा लेट हूँ असल में। जब मैं कनेक्ट करने लगा तो मैं पहले मैंने एक डाटा कनेक्शन से कनेक्ट किया, उसकी स्पीड ठीक नहीं आ रही थी, फिर मुझे डाटा कनेक्शन चेंज करना पड़ा। ये भी बड़ा मसला है। पूरे डिफरेंट डाटा कनेक्शन ट्राई करने पड़ते हैं जिसकी स्पीड बेहतर होती है। आप उसके साथ ही यूट्यूब लाइव कनेक्ट कर सकते, ब्लॉक्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर्किट भी एक नेटवर्क है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हो सकते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और लिंक्स। तो इसी तरह से हमारे बैटरी नेट के भी जो कि मॉडल है किसी फिजिकल प्रोसेस को, क्योंकि मॉडल कर रहा है किसी फिजिकल प्रोसेस को, उसके भी डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हो सकते हैं। से एक बिल्डिंग ब्लॉक हो सकता है, उसके लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्लेस, उसको ऐसे करके राउंड प्लेस से रिप्रेजेंट, राउंड सर्कल से, एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते, राउंड ऑफ ट्रांजिशन। और हमारे पास टोकन्स हैं जो कि फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। टोकन्स are represented in the form of dots. Or tokens are inside places. तो ट्रांजिशंस एक्टिवेट करती हैं, फ्लो को मॉडल कर सकें ट्रांजिशन से। एक सिस्टम, perhaps the most basic system is कि ये हमारे पास एक प्रोसेस है, उसमें हमारे कुछ रॉ मटेरियल है और ये बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट, और ये प्रोसेसर है। जैसे ही कन्वेयर बेल्ट के पास कोई चीज़ आती है तो इस ट्रांजिशन को एक्टिवेट हो जाना है, सो दैट के प्रोसेसर इस बेल्ट पे आने वाले आइटम
कन्वे प्रोसेस सिस्टम के ऊपर कोई चीज आ रही है और प्रोसेसर ने उसको प्रोसेस करना है. So this transition T is fired. The transitions can be ये ट्रांजिशन फ्लो को कंट्रोल करती हैं. ट्रांजिशंस कंट्रोल द फ्लो. जब तक ट्रांजिशन फायर नहीं करेगी उस तक प्रोसेसर अपना प्रोसेसिंग का काम स्टार्ट नहीं कर सकता. दे कैन बी इधर हमें में एक स्लाइड से डिफरेंस है. इनेबल्ड मतलब और फायर्ड मतलब क्या है. इनेबल्ड का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर आपके पास टोकन है, यहाँ पर आपके पास एक टोकन है, इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजिशन इनेबल्ड है. इनेबल्ड होने का मतलब ये है कि ट्रांजिशन कैन फायर, लेकिन जरूरी नहीं कि वो फायर करे. ट्रांजिशन इज इनेबल्ड. वो टोकन इफ वी हैव अ टोकन एट फायर और ऑपरेट, इसके ऑपरेट करने को फायर करना बोलते हैं. कैन फायर और ऑपरेट, लेकिन कैन बड़ी जरूरी चीज है इसमें. कैन बड़ी जरूरी चीज है. कैन का मतलब ये है कि ये कर सकती है, जरूरी नहीं कि ये फायर होगी. तो यहाँ पर टोकन अवेलेबल होने के साथ जरूरी नहीं कि ये फायर हो जाए. फायर होने का डिसीजन ट्रांजिशन करता है, लेकिन कब करता है, जब वो इनेबल्ड हो. इनेबल्ड कब होगा इस केस में, तो यहाँ पर आपके पास एक टोकन है. तो आइटम ऑन बेल्ट और प्रोसेसर का एक फिजिकल सिस्टम है, इसको मॉडल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो या जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया उनको बता दो. पैटर्न नेट हम इसको मॉडल करने की कोशिश कर रहे हैं. और 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 हमने ये बताया कि इसमें कुछ प्लेसेस हैं, ट्रांजिशंस हैं और टोकन्स हैं. टोकन का मतलब होता है कि टोकन किसी भी जगह पर प्रेजेंट टोकन किसी प्रोसीडिंग ट्रांजिशन को इनेबल कर रहा होता है. प्रोसीडिंग ट्रांजिशन को इनेबल कर रहा होता है, यानी ये टोकन इस ट्रांजिशन को इनेबल कर रहा है कि अगर ये ट्रांजिशन फायर कर सकती है, करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन अगर यहाँ पर टोकन प्रेजेंट नहीं है तो फिर ट्रांजिशन फायर नहीं कर सकती. तो एनेबल्ड ट्रांजिशन कैन फायर, लेकिन एनेबल्ड होने का मतलब फायर होना हरगिज नहीं है. एनेबल होने का मतलब ये इट कैन फायर. तो आइटम ऑन बेल्ट प्रेजेंट है और अब हमारे पास वर्कर चाहे या एक ऑटोमेटेड सिस्टम अगर चाहे तो वो जो आइटम बेल्ट के ऊपर आया उसको प्रोसेसर को देके उसकी प्रोसेसिंग करवा सकता है. तो लेकिन अगर यहाँ पर आइटम ही प्रेजेंट ना हो तो फिर हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम या हमारा मैनुअल वर्कर रॉ आइटम प्रोसेसर को प्रोवाइड कर ही नहीं सकता. तो इसका मतलब एनेबल्ड नहीं है. तो अगर यहाँ टोकन नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके पास रॉ आइटम बेल्ट के ऊपर अवेलेबल नहीं है और आप उसको प्रोसेस नहीं कर सकते. एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जिसमें दो प्लेसेस हैं, एक ट्रांजिशन है और एक टोकन है. डॉट ये टोकन है, ये प्लेसेस है और ये ट्रांजिशन है, और दो आर्क्स हैं. तो क्या करना चाहिए. कैन फायर इफ टी फायर्स इफ टी फायर्स ट्रांजिशन फायर कर देती है तो फिर क्या होगा. टोकन मूव्स टू टोकन मूव्स टू प्लेस P2. अगर ट्रांजिशन फायर कर देती है तो टोकन यहाँ आ जाएगा, तो टोकन यहाँ आ जाएगा. ठीक है. और आप ट्रांजिशन फायर नहीं कर सकती. एंड नाउ टी इज नो लॉन्गर enabled. एंड नाउ द ट्रांजिशन टी is no longer is no longer enabled. It's no longer enabled. टी enabled नहीं है. अगर टी enabled होता तो फिर फायर हो सकता था, क्योंकि इसके पास यहाँ पर टोकन नहीं है, इसलिए टी enabled नहीं है. टी enabled नहीं है. अगर टोकन P2 के पास है तो फिर टी अवेलेबल नहीं, टी enabled नहीं है. ट्रांजिशन टी enabled नहीं है. इट इज ओनली enabled इफ यू हैव अ टोकन है. किसी भी टाइम के ऊपर किसी भी एक बहुत सिंपल एग्जांपल से हमने पैटर्न नेटवर्क में नहीं कुछ की, लेकिन आगे चल के हम थोड़ी सी और बेहतर एग्जांपल भी बनाएंगे. जी. किसी भी टाइम के ऊपर किसी भी पैटर्न नेट की की जो स्टेट है, स्टेट ऑफ टोकन्स, उसको हम बोलते हैं मार्किंग.
मार्किंग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमने पढ़ा प्लेस, टोकन और ट्रांजिशन, ऑब्जेक्ट ये पढ़ा। तो एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है मार्किंग, मार्किंग ऑफ अ मार्किंग ऑफ अ पैटर्न। मार्किंग का मतलब होता है स्टेट, मार्किंग का मतलब होता है स्टेट, स्टेट स्टेट ऑफ अ पैटर्न, स्टेट ऑफ अ पैटर्न। स्टेट ऑफ अ पैटर्न का मतलब है कि आपके पास कितनी प्लेसेस हैं और हर प्लेसेस में, और आपके पास टोकन्स कहाँ कहाँ हैं। टोकन्स को अगर हम ऐसे करें तो इसकी हम लिख सकते हैं ये इसकी मार्किंग है इन जनरल, क्योंकि हमारे पास दो प्लेसेस हैं, एक P1 प्लेस है, एक P2 प्लेस है। P1 प्लेस के पास कोई टोकन नहीं है, P1 के पास है, तो ये इस वजह इसकी करंट मार्किंग, इस वजह से करंट मार्किंग है। इससे पहले इसकी मार्किंग क्या थी? तो टोकन जब ऐसे है तो मार्किंग है, तो मार्किंग है 0, और जब टोकन ऐसे था तो फिर मार्किंग थी 1। पेट्री नेट्स है, पेट्री नेट्स की अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो पेट्री नेट की प्लेसेस हैं। पेट्री नेट की प्लेसेस, टोकन, ट्रांजिशन का एनेबल होना और ट्रांजिशन का फायर करना और मार्किंग, ये 5-6 चीजें हमने पढ़ी हैं। और ये 5-6 बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको यूज करके हम किसी भी फिजिकल सिस्टम को मॉडल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें इसी सिस्टम को, ये तुम्हारे पास है, अगर हम इसी सिस्टम, अच्छा हाँ, एक इससे पहले कि अगर हम एक और चीज पढ़े वो इसका है स्टेट स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, पढ़ते हैं फिर इस पैटर्न को मॉडिफाई करते हैं। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का मतलब ये है कि मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज आपके पास हैं उतनी जितनी आपके पास नंबर ऑफ प्लेसेस है, दो है, और नंबर ऑफ कॉलम्स उतने हैं जितनी आपके पास ट्रांजिशन हैं। इस केस में हमारे पास सिर्फ एक ट्रांजिशन है, इसे नहीं लिखा गया और लिख देता हूँ ये। तो जनाब P1, अगर ये ट्रांजिशन अगर ये ट्रांजिशन एक्टिवेट होती है तो आपके पास P1 से एक टोकन चला जाता है और P2 के पास एक टोकन आ जाता है। आप इसकी एंट्रीज है वो या 0 है या -1 है या +1 है। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की इस केस में ये सिर्फ एक कॉलम वेक्टर ही है, छोटा सा मैट्रिक्स है। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स STM की एंट्रीज एंट्रीज कैन इधर भी entries can either be 0, -1 और +1। तो -1 का मतलब एक टोकन कंज्यूम होना, माइनस, तो द एंट्री इन state transition matrix is -1 if a token consumes as a result of firing that transition। जैसे ये transition, this is -1 or the entry in STM is +1 if a token is is received as a result of firing that transition। जैसे कि प्री फायर हो तो P2 के पास एक टोकन आ गया तो इसलिए प्लस, P1 से चला गया इसलिए -1, and the entry in STM is 0
if a token is neither consumed is neither consumed nor received as a result of that transaction. अगर यहाँ पर कोई स्टेट क्लियर प्लेस भी होती जिसको ना तो कोई टोकन रिसीव हुआ होता और ना ही कोई टोकन वहां से कंज्यूम हुआ होता एज a result of this transition, तो हम उस ट्रांजिशन को तो फिर हम वहां पर जीरो लिख देते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने अपने नोट्स में ये किया हुआ है कि मैंने यहाँ पर इस ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसी पेट्री नेट को, इसी बेसिक पेट्री नेट को जो कि एक प्रोसेस बेल्ट का सिस्टम है, बेल्ट प्रोसेसर और बेल्ट और प्रोसेसर के सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉडल कर रहा है। ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने ये किया था कि मैंने इसके साथ एक और ट्रांजिशन इंट्रोड्यूस करा दिया है, क्योंकि वो ज़्यादा लॉजिकल भी है कि जब प्रोसेसर ने कोई चीज़ प्रोसेस कर ली होगी, ऑफ कोर्स फिर आइटम के पास फिर बेल्ट के पास आ गया होगा सिस्टम ये देखने के लिए कि बेल्ट के पास और रॉ मटेरियल आ गया या नहीं, और अगर बेल्ट के ऊपर रॉ मटेरियल आ गया होगा तो फिर वो तो मतलब ये प्रोसेस कंप्लीट तभी होगा। तो अब इसके अंदर एक और ट्रांजिशन इंट्रोड्यूस करेंगे, T1 कह देंगे, इस ट्रांजिशन को T2 कह देंगे। तो अब जब प्रोसेसर ने कंज्यूम कर लिया तो प्रोसेसर ने आपका वो मटेरियल को यूज करके अपनी प्रोसेसिंग कर ली है, तो फिर T2 फायर हो जाएगा, फिर आपके पास कंट्रोल यहाँ आ जाएगा कि जी अब आपके पास बैठ के ऊपर है, फिर प्रोसेसर को जरूरत होगी तो T1 फायर होगा और फिर टोकन यहाँ आ जाएगा और प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। टोकन इज काइंड ऑफ लाइसेंस, अगर आप इसको तो गौर करें तो टोकन इज काइंड ऑफ इट्स अ काइंड ऑफ लाइसेंस टू डू सम वर्क, लाइसेंस बेल्ट के ऊपर आइटम लाने लाइसेंस है, ये लाइसेंस मिलने के अपने आए, लेकिन T1 सिर्फ उसी वक्त फायर हो सकता है, यानी ऑपरेट हो सकता है, प्रोसेसर उसी वक्त काम करना स्टार्ट कर सकता है अगर T1 फायर हो, लेकिन T1 के फायर होने के लिए T1 का इनेबल होना जरूरी है। T1 इनेबल होगा तो ही फायर होगा और फिर टोकन यहाँ आ जाएगा और प्रोसेसर के पास एक टोकन आ जाएगा, लाइसेंस आ जाएगा कि वो काम कर सकता है। टोकन इज अ काइंड ऑफ लाइसेंस, कोई फिजिकल चीज नहीं है, इट्स फिजिकल, इट्स नॉट अ फिजिकल थिंग, इट्स नॉट अ फिजिकल थिंग, इट्स अ काइंड ऑफ लाइसेंस। हम इसको यूज कर सकते हैं रियल वर्ल्ड सिस्टम्स को मॉडल करने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने इसको कंप्लीट कर दिया था कि आइटम ऑन बेल्ट को के पास आप टोकन वापस चला जाए, सो दैट कि अब और अगर आइटम आ गई है तो फिर ट्रांजेक्शन फायर और फिर प्रोसेस और इस तरह से कॉन्टिन्यूसली ये सिस्टम काम करता है। अब ये क्लोज लूप सिस्टम हो गया है, ये ओपन लूप सिस्टम था और इनकम्प्लीट था, अभी क्लोज लूप है और कंप्लीट है। ठीक है, तो अब ये कर सकते हैं कि हम इसकी डिफरेंट मार्किंग बना सकते हैं, डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट मार्किंग हो सकती है। मार्किंग वही हो सकती है, एक मार्किंग ये है इसकी 1 0 और दूसरी मार्किंग है 0 1, तो मार्किंग तो वही हो सकती है लेकिन इसका एसटीएम डिफरेंट होगा, क्योंकि एसटीएम क्यों डिफरेंट होगा स्टैंडर्डाइजेशन मैट्रिक्स क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि आपके पास है T1 T2 T1 और T2, तो वही आपके पास है। अगर आप इनको फिल करना चाहें तो जल्दी से फिल करते हैं, जल्दी से फिल करते हैं। ट्रांजेक्शन टी के फायर होने से टोकन कहाँ से कंज्यूम होगा और कहाँ पर ऐड होगा।
The state transition matrix is also called incidence matrix. Matrix IM, STM or IM, or incidence matrix IM. तो अगर आपके पास T1 एक ट्रांजिशन है, जब वो फायर होती है तो P1 से टोकन कंज्यूम हो जाता है और P2 के पास आ जाता है। जब P2 फायर होती है तो P2 से कंज्यूम हो जाता है और P1 के पास आ जाता है। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इंसिडेंस मैट्रिक्स और स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, IM और STM। और अगर आप चाहें तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के साथ आप बड़ा इंटरेस्टिंग काम कर सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स STM और IM इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इंस्टेंस मैट्रिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों इंटरेस्टिंग है? ये बड़े मजे के इसके साथ हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। ऐसे हो सकता है आपके पास एक मार्किंग गिवन है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये मार्किंग गिवन है 10, ठीक है जी, 10 मार्किंग गिवन है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। गिवन मार्किंग एम नॉट कह देते हैं इसको, इनिशियल मार्किंग। जीरो मीन्स इनिशियल, एम जीरो या एम नॉट। आपके पास एक मार्किंग गिवन है इनिशियली और आप उसको एक कॉलम वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं। अभी तक हमने उसको रो की फॉर्म में लिखा था, तो हम थोड़ी सी लिबर्टी लेते हैं, हम उसे कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये P1 है, थोड़ी सी आप मुझे लिबर्टी दें, इसको ऐसे लिख लेता हूँ P1 और P2, ऐसे करके मैंने इनिशियल मार्किंग लिख दी है। अच्छा, अब अगर मैं चाहूँ तो मैं जान सकता हूँ कि अगर T1 फायर होगा तो नेक्स्ट मार्किंग क्या होगी। T1 फायर होने के बाद टोकन्स की नई पोजीशन क्या होगी। जैसे कि मैं हर मार्किंग को जाके चेक करूँ कि अगर ये मार्किंग, अब मैं हर ट्रांजिशन में जाके चेक करता हूँ कि ये ट्रांजिशन फायर हुई थी तो टोकन्स की मूवमेंट कहाँ हुई होगी और कहाँ। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा, हम देखेंगे भी। तो अगर हमारे पास ये एम नॉट एक इनिशियल मार्किंग है जो कि इसमें पहले फर्स्ट रो P1 के ऊपर प्रेजेंट टोकन को रिप्रेजेंट करेगी और सेकंड रो P2 के ऊपर, हम ये कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट मार्किंग M1 फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास पोजीशन T1 फायर होती है। अगर T1 फायर होती है तो नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या बनेगी। अब हम इस कॉलम को T1 वाले कॉलम में ऐड कर देते हैं, बाकी बाकी मैट्रिक्स को निगलेक्ट कर देते हैं। मैट्रिक्स बड़ा हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं, हम सिर्फ इस T1 वाले कॉलम में अपने इस स्टेट वाले कॉलम को ऐड कर देते हैं। ये हो गया -1 +1, बाकी सब तो हम निगलेक्ट कर देते हैं। -1 +1 +1 +0, आपके पास नेक्स्ट है 0 यानी P1 के पास टोकन नहीं होगा, आपके पास P2 के पास टोकन होगा। अच्छा, इसलिए फिर एक क्वेश्चन है यहाँ पर, आप M1 फाइंड करने के लिए इनको फायर ना करते बल्कि आप T2 को फायर करके गिवन दिस एम नॉट आप M1 फाइंड करते लेकिन आप T2 को फायर कर देते, तो आप कहते हैं अच्छा फिर मुझे इस कॉलम को ऐड करना है, इस बाकी सबको मैं निगलेक्ट कर दूंगा। 1 +1 और ये हो जाता -1 +0, तो ये हो जाता 2 और -1, ये आ गया एक सिली आंसर, एक बेवकूफाना आंसर आ गया। क्योंकि सिली आंसर आपको ये बताता है, सिली आंसर आपको क्या बताता है, सिली आंसर आपको ये बताता है कि ये ट्रांजिशन जिसको आपने फायर करने की कोशिश की है ये इनेबल्ड नहीं थी। अरे बात है, अगर आपके पास यहाँ है तो T2 तो इनेबल्ड नहीं है, T2 इनेबल्ड तब होगा, क्योंकि सिली आंसर हमें ये बताता है कि आपके पास, इसीलिए आंसर हमें ये बताता है कि टोकन, कि ये आपके पास, इसीलिए आंसर हमें ये बताता है कि आपके पास ट्रांजिशन एनेबल्ड नहीं थी, ट्रांजिशन वाजंट एनेबल्ड। तो अगर इनेबल्ड होती तो फिर ये सीधी आंसर ना आता,
इसीलिए आंसर के आने की रीज़न ये है कि ये ट्रांज़िशन इनेबल्ड नहीं थी। ठीक है जी। तो बात ये है कि तो बात ये है ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसने आपको ये बता दिया कि अगर आपके पास सिली आंसर आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि तो यूजिंग आईएम एंड करंट मार्किंग, यूजिंग इंसिडेंस मैट्रिक और स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, यूजिंग आईएम and M naught at any given initial state M naught, we can mathematically tell which transition or transitions is or are enabled. ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स होंगे उसमें एक एक अपर टोकन प्रेजेंट होने की वजह से एक से ज्यादा ट्रांजिशंस भी एनेबल्ड हो सकती हैं। अगर एक से ज्यादा ट्रांजिशंस एनेबल्ड हैं तो कौन सी एनेबल्ड है? तो मैथमेटिकली इन दो चीजों को यूज करके किसको इंसिडेंस मैट्रिक्स या स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स और एम नॉट को यूज करके ये बता सकते हैं कि कौन सी हम हर कॉलम में ऐड करते जाएं जहां पर हमें सिली आंसर मिल जाएगा। तो सिली आंसर हमें ये बताता है कि ये एक डिसेबल्ड ट्रांजिशन को फायर करने का रिजल्ट है। डिसेबल्ड ट्रांजिशन को फायर करने का रिजल्ट है। अच्छा जी, एक जल्दी से हम एक और एग्जांपल करें। हमें काफी सारे एग्जांपल्स करने हैं ताकि हम पैटर्न्स को और उनकी बेसिक्स को समझ सकें। ठीक है जी। तो उसके बाद मेरे पास है एक और एग्जांपल, वो ये P2 है, P3, P3 तो ये भी एक नेटवर्क है और इनिशियली इसकी मार्किंग ये है कि इस इनिशियल मार्किंग एम नॉट की है। ये अगर हम उसे कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो P1 1 है, P2 0 है और P3 भी 0 इनिशियल मार्किंग है। इनिशियली हमारे पास एक वेक्टर है और हम इसके आई एम या एस टी एम भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें हम बनाएंगे तो ये P1, ये P2, P3 और हमारे पास दो ट्रांजिशंस हैं P1 और P क्रॉस T मैट्रिक्स, P रोज T कॉलम्स। तो P1 T1 जब फायर होता है तो P1 से एक टोकन कंज्यूम हो जाता है और P2 के पास एक आ जाता है और P3 क्या हुआ? फर्स्ट ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक 1 9:50 9:50 हो गए, फर्स्ट ब्रेक का टाइम हो गया। लेकिन हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था तो हमारी ब्रेक भी 10 मिनट्स आगे चली गई है ना, क्योंकि हमने 10-12 मिनट्स लेट स्टार्ट किया था। तो हमारी फर्स्ट ब्रेक भी 10 से 12 मिनट्स आगे चली गई और हमारा सारा लेक्चर 10 से 12 मिनट्स आगे चला जाएगा। मैट्रिक्स की वैल्यूज कैसे फाइंड होंगी? बच्चा पूछ रहा है मैट्रिक्स की वैल्यूज कैसे फाइंड होंगी? मैट्रिक्स की वैल्यूज ऐसे फाइंड होगी ना कि मैट्रिक्स की वैल्यूज तो मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ इस आईएम को। एक बच्चा पूछ रहा है कि मैट्रिक्स की वैल्यूज कैसे फाइंड होंगी? ऐसे फाइंड होंगी जनाब। आई एम मैंने बताया कि जो इंसिडेंस मैट्रिक्स या स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास ओनली 3 ऑप्शंस है। ओनली 3 ऑप्शंस है। ओनली 3 ऑप्शंस, या
-1 हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। मैंने लिख के बताया थोड़ी देर पहले कि -1 तब होगा जब वहाँ से उस प्लेस से टोकन कंज्यूम हुआ होगा। +1 हुआ तब हुआ होगा जब उस ट्रांज़ैक्शन के रिज़ल्ट में किसी प्लेस के ऊपर टोकन ऐड हुआ होगा। और 0 तब होगा वो अनअफेक्टेड रहा होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। हमने यहाँ पर ये हैं P1, P2 और P3 और कॉलम्स हैं T1 और T2 और हम इस मैट्रिक्स को बनाते हैं। अगर T1 फायर होता है T1 फायर होता है। अच्छा जब आप ये आईएम बना रहे होते हैं तो आपके पास यू डोंट केयर अबाउट इनिशियल कंडीशन एम नॉट। तो व्हाइल क्रिएटिंग आई एम यू डोंट केयर अबाउट यू डोंट केयर अबाउट द मार्क एम नॉट। यू डोंट केयर एनी मार्किंग इसको लिखना चाहिए। एम नॉट या फर्दर किसी मार्किंग का को आपको क्या कोई परवाह नहीं कर रहे होते। ये किसी मार्किंग की परवाह किए बगैर लिखा जाता है। आया हमेशा बगैर किसी मार्किंग के नहीं करता है। इससे होता है कि आप पहले आप जो आप आई एम ड्रॉ कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं कोई टोकन नहीं है, पूरे नेटवर्क में कोई टोकन नहीं है, ठीक है, कोई टोकन नहीं है, पूरे नेटवर्क में कोई टोकन नहीं है। अगर गिवन फायर हुआ और यहाँ टोकन हुआ तो वो कंज्यूम होगा, P2 के पास आ जाएगा। इसका मतलब है +1 और P3 अनअफेक्टेड होगा। T1 के फायर होने से P3 से ना टोकन कंज्यूम हुआ होगा ना टोकन आया होगा, तो इसलिए। और सिमिलरली जब T2 होगा तो P2 से एक टोकन कंज्यूम होगा। कोर्स होगा तो होगा ना, मतलब अगर होगा तो कंज्यूम होगा। कंज्यूम कर लेते हैं होगा। तो T2 के फायर हो तो P2 से एक टोकन कंज्यूम होगा यानी -1 P3 में ऐड हो जाएगा +1 और P1 अनअफेक्टेड रहेगा। T2 के फायर होने से P1 अनअफेक्टेड रहेगा। और यहाँ पर P3 ट्रांजिशन भी है, ये एक कॉलम। P3 ट्रांजिशन के फायर होने से P3 से कंज्यूम होगा, P1 के पास आ जाएगा। ठीक है, -1 P1 के पास आ जाएगा 1, लेकिन P2 अनअफेक्टेड रहेगा। उससे ना टोकन कंज्यूम होगा ना टोकन वहां पर मिलेगा, उसको मिलेगा, ना टोकन कंज्यूम होगा ना ना ऐड होगा। तो ये इंसिडेंस मैट्रिक्स और इसको ड्रॉ करते हुए हम इनिशियल कंडीशन की या इनिशियल मार्किंग की या किसी भी मार्किंग की कोई परवाह नहीं करते। हम इसको वी डोंट केयर अबाउट एनी मार्किंग, केयर अबाउट एनी मार्किंग। रिज्यूम करते हैं कि अगर T1 फायर हुआ तो P1 के पास होगा, टोकन होगा, वो कंज्यूम हुआ होगा, P2 को ऐड होगा। दिस इज जनरल डिस्क्रिप्शन। तो यूं कहने का मतलब ये है कि इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेट, डिस्क्रिप्शन ऑफ नेटवर्क। इसको मार्किंग के साथ कोई लेना देना नहीं है, स्टेट कोई लेना देना नहीं है ऑफ द नेटवर्क। डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेटवर्क है, ये मार्किंग की डिस्क्रिप्शन नहीं है, इससे मार्किंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। मार्किंग कुछ भी हो, सिर्फ ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेटवर्क है। आपके पास डिस्क्रिप्शन, आप नेटवर्क क्या था, ठीक है। अच्छा, अब वंस ये है और ये इनिशियल मार्किंग गिवन है और ये आईएम हमने बना दिया और आप इस आईएम से सेटिस्फाइड नहीं है, तो लग रहा है कि IAM ठीक है। और है भी ठीक। तो हम ये देखते हैं कि अगर इनिशियल मार्किंग गिवन है एम और अगर हम M1 को फायर कर देते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे। और अगर हम ट्रांजिशन T1 को फायर कर देते हैं हमारी इनिशियल स्टेट की, यहाँ पर एक टोकन है, तो M1 क्या होगी, M1 बाय फायरिंग T1 इनिशियल स्टेट, और जो T1 वाला कॉलम है वो इसमें ऐड कर देंगे। -1 +1 0 0
ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी, ये टोकन यहाँ 0 1 0 ये स्टेट होगी, क्योंकि ये 3 वैल्यूज हैं, ये कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं P1 P2 और P3 को। यहाँ भी यही कर रही थी P1 P2 and P3। अच्छा, अगर हम गलती से इस इनिशियल मार्किंग के साथ हम कहते नहीं हम T2 को फायर करते हैं, अगर इनिशियल मार्किंग ये होती T2 तो इनेबल्ड ही नहीं है, लेकिन अगर हम कहते नहीं हमने करना है, हमने T2 को फायर करना है, तो हम M1 कैसे लाते हैं? बाय फायरिंग T2, कहते हैं 0 0 और T2 वाला कॉलम तो हमारे पास कुछ अनरियलिस्टिक और सिली आंसर्स आ जाते हैं, अनरियलिस्टिक और सिली। है ना? -1 तो स्टेट नहीं हो सकती, स्टेट या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, या टोकन हो सकता है किसी प्लेस के ऊपर, या नहीं हो सकता, -1 टोकन नहीं होता। -1 एंट्रीज IM के अंदर होती है, इंसिडेंस मैट्रिक्स में, जो वो नेटवर्क को डिस्क्राइब कर रहा है। स्टेट्स, जो स्टेट वेक्टर होता है उसके अंदर 1 0 सी होती हैं, ये टोकन है या नहीं है, बहुत सारा अगर हम एक ही टोकन के साथ डील करें, अनरियलिस्टिक एज्यूमिंग कि हम एक ही टोकन के साथ डील करें, हम किसी प्लेस में 2 टोकन अलाउ नहीं करें, unrealistic or silly result tells us that we have fired a uh, disabled ट्रांजिशन, एक डिसेबल ट्रांजिशन को फायर कर रही है। T2 डिसेबल्ड था ना, वो टोकन यहाँ था, अगर टोकन यहाँ होता तो फिर T2 इनेबल्ड होता। एक डिसेबल्ड ट्रांजिशन को हमने फायर किया, इसलिए एक सीधी आंसर आ गया। अगर हम T3 को फायर कर देते तो फिर क्या होता? 3 तो 1, ये हो जाता 0, ये हो जाता -1, ये हो जाता 2, ये 0 और ये -1, तो ये भी एक अनरियलिस्टिक आंसर बन जाता है। ये हमें बता रहा है ये मैथमेटिकल, ये और ये कहाँ पे यूजफुल है, जब आपके पास एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है और आप इसको ऐसे इंडिविजुअली टोकन्स की मूवमेंट को हाथ से ट्रैक करना, विजुअली ट्रैक करना एक एक ट्रांजेक्शन के बाद मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर ये मैथमेटिकल टूल हमारी हेल्प करेगा। इसके बाद एक और एग्जांपल है हमारे पास, हम IM बनाकर और रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक एनालाइज कर सकते हैं, तो आप जरा चीजों को बेहतर समझ सकें। और एग्जांपल है एक थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स लुकिंग बैटरी नेट है, किसी फिजिकल सिस्टम को मॉडल कर रहे हैं और हम इसमें इंसिडेंस मैट्रिक्स प्लॉट करना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं, और ये स्टार्ट होता है ऐसे और ऐसे, ये इसकी इनिशियल मार्किंग है। तो इरिस्पेक्टिव की इनिशियल मार्किंग क्या है, अगर हम इसके लिए IM ड्रॉ करना चाहें तो, तो ऑफ कोर्स वो किसी भी मार्किंग से
मार्किंग से इंडिपेंडेंट होगा। अगर आई एम ड्रॉ करना चाहें इंसिडेंस मैट्रिक्स तो किसी भी मार्किंग को नेगलेक्ट करना होगा, रिस्पेक्टिव की क्या मार्किंग है। आई एम होगा इंसिडेंस मैट्रिक्स होगा, इसमें हमारे पास 3 प्लेसेस हैं, P1, P2, P3, और कितनी ट्रांजिशंस हैं, T1, T2 और T3। T1, T2, T3 ट्रांजिशंस हैं। तो हम आराम से बता सकते हैं कि T1 जब कोई भी फायर होगी, जब कोई भी T1 फायर होगी तो P1 के पास से एक टोकन आ जाएगा, +1 आ जाएगा, और P2 और P3 इसके साथ इंडिपेंडेंट है। ऐसी ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि वी आर ब्रेकिंग टोकन्स फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, दूसरी साइड से किसी प्लेस के साथ नहीं जुड़ा हुआ, वी आर ब्रिंगिंग टोकन्स साइड वर्ल्ड। और अज्यूमिंग कि आउटसाइड वर्ल्ड के पास टोकन हैं, और जब कोई भी T1 फायर होता है तो P1 में एक टोकन आ जाता है, जब कोई भी T1 फायर होता है तो P1 में एक टोकन आ जाता है, अज्यूमिंग कि आउटसाइड वर्ल्ड के पास इनफाइनाइट टोकन हैं। इसे ये मतलब है। ठीक है, तो जब हम T1 फायर करते हैं तो P1 के पास एक टोकन आ जाएगा, कंज्यूम कहीं से नहीं होगा, आउटसाइड वर्ल्ड से कंज्यूम होगा, उसके पास इनफाइनाइट टोकन जो और P3 से इंडिपेंडेंट है। P2 फायर होगा, P2 है, P2 फायर होता है तो हमारे पास P3 के पास एक टोकन आ जाता है, और P1 से और P2 से एक एक कंज्यूम हो जाता है। ऐसा पॉसिबल है कि 2 जगहों से टोकन कंज्यूम हो जाए और एक जगह पर आ जाए, ऐसा पॉसिबल है कि टोकन 2 जगहों से कंज्यूम हो जाए। सही है, जब T2 फायर हुआ तो इसके पास जो इनपुट्स आ रही वो एक P2 से आ रही थी और एक P1 से, तो ये T2 enabled भी कब होगा, T2 is enabled only when P1 and P2 both have tokens। इन दोनों के पास टोकन होंगे तभी T2 enabled होगा, अदरवाइज T2 enabled नहीं होगा। मतलब इन दोनों में और नहीं है, इन दोनों में लॉजिकल एंड है, दोनों के पास टोकन होना जरूरी है। अगर एक के पास भी टोकन और एक के पास होगा तो T2 enabled नहीं होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और इन दोनों के पास टोकन हुआ तो ये enabled होगा, और अगर ये फायर भी हो गया तो ये 2 टोकन्स कंज्यूम हो जाएंगे और यहाँ पर एक टोकन आ जाएगा। इफ T2 इज फायर्ड तो कोई मतलब टोकन्स का काउंट पूरा रहना जरूरी नहीं है, किसी भी वक्त किसी भी मार्किंग में, किसी भी 2 मार्किंग्स में टोकन्स का काउंट प्रिजर्व होना जरूरी नहीं है। T2 is fired, if T2 is fired, tokens are are consumed from even P2, and token is added, one token added to P3 के पास एक, in other words token count may not be preserved across markings, एक मार्किंग से दूसरी मार्किंग में जाते हुए टोकन काउंट का प्रिजर्व होना जरूरी है। एक मार्किंग में थे जहां पर
दो टोकन्स थे, आप उससे नेक्स्ट मार्किंग में गए, जब 2 2 फायर हुआ तो आप एक नेक्स्ट मार्किंग में चले गए, तो ये दो टोकन्स कंज्यूम होकर एक टोकन बन गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टोकन काउंट का प्रिजर्व होना कोई जरूरी नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप P3 फायर करें तो ऐसा होगा कि जब आप P3 फायर करेंगे तो इसका एक टोकन यहाँ पर होगा P3 के पास, वो कन्वर्ट हो जाएगा दो टोकन्स में, और वो P1 P2 दोनों लोड हो जाएंगे। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक टोकन एक ट्रांजिशन के फायर होने से एक टोकन दो में कन्वर्ट हो जाए, और ऐसा भी पॉसिबल है कि ट्रांजिशन के फायर होने के बाद दो टोकन्स एक टोकन बन जाए। टोकन काउंट may not be preserved across markings, एक मार्किंग से दूसरी मार्किंग जाती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे जहन में आ गई थी, तो मैंने आपको बता दी है। अच्छा जी, तो वापस आते हैं, हम यहाँ पर आई एम ड्रॉ कर रहे थे इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो अगर T1 फायर होता है तो P1 से टोकन कंज्यूम हो जाएगा, और P1 में एक टोकन ऐड हो जाएगा और आउटसाइड वर्ड से कंज्यूम हो जाएगा जिसके पास इनफाइनाइट P2 और P3 इंडिपेंडेंट रहेंगे। अगर T2 फायर होता है तो P2 और P1 से उन दोनों से एक टोकन कंज्यूम हो जाएगा, P3 में वन ऐड हो जाएगा। और अगर T3 फायर होता है तो P3 से कंज्यूम हो जाएगा, और और P1 में और P2 में। ठीक है, सही बनाया मैंने, मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है अपने पास, गलत नहीं बनाया मैंने। ओके, तो अब क्या करते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं इस इनिशियल मार्किंग से, और देखते हैं कि कैसे आई एम हमारी हेल्प करता है नेक्स्ट मार्किंग में जाने के लिए। आई एम के अलावा सब कुछ रेज कर देता हूँ। तो सर, इन दिस केस T2 की बारी P2 पे, T2 की बारी P2 पे टोकन तो नहीं होगा आफ्टर T1, तो T2 पे टोकन फायर नहीं हो सकता। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। जब हम आईएम बना रहे होते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि इट्स अ नेटवर्क, नेटवर्क्स डिस्क्रिप्शन मार्किंग से इंडिपेंडेंट होता है। पर वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नेटवर्क्स डिस्क्रिप्शन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ IM is independent of any marking. IM is independent of any marking. IM की जब एंट्रीज लिख रहे होते हैं तो आप ये नहीं सोच रहे होते कि मार्किंग क्या है, ठीक है, आप ये नहीं सोच रहे होते कि क्या मार्किंग है, आप ये नहीं देख रहे कि जब T1 आप कहते हैं T1 फायर होगा तो क्या होगा, तो आप कहते हैं T1 फायर होगा तो आप अज्यूम करते हैं कि T1 इनेबल्ड ही है, ठीक है। जब आप कहते हैं कि T2 फायर होगा तो क्या होगा, तो आप एज्यूम कर लेते हैं कि T2 इनेबल्ड है। जब आप कहते हैं कि T3 फायर होगा तो क्या होगा, तो आप एज्यूम कर लेते हैं कि T3 इनेबल्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपने ये कुछ लिख लिया, नेटवर्क एक स्टेट के ऊपर पहुंच गया और अब पता नहीं T2 फायर हो सकता है या नहीं, तो मैं ऐसे खाम खा ही लिख दूं। जब मैं यहाँ पे पहुंचा था, इसको T1 को फायर करके पहुंचा था, तो पता नहीं T2 इनेबल्ड था या नहीं। तो मार्किंग को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, मार्किंग्स को भूल जाना है। मार्किंग्स से ये इंडिपेंडेंट है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी मार्किंग। आपने जब ये फर्स्ट कॉलम लिखना है तो आपने ये एज्यूम करना है कि T1 एनेबल्ड है, ठीक है। मार्किंग स्टेट कुछ भी हो, नेटवर्क की मार्किंग, नेटवर्क की स्टेट भी हो, व्हेन यू राइट दिस फर्स्ट कॉलम, तो आपने उसको देखना ही नहीं है, आप सामने कोई टोकन नहीं है पूरे नेटवर्क में। व्हेन यू व्हेन यू राइट द फर्स्ट कॉलम, assume assume T1 is enabled,
इसको किसी पीछे वाली चीज से नहीं जोड़ना। और T1 कब enabled होगा? T1 कब enabled होगा? जब आउटसाइड वर्ल्ड के पास हो। आउटसाइड वर्ल्ड के पास तो हमेशा से रुके ना, इसलिए T1 हमेशा नहीं होता। तो जब कब T1 फायर होगा तो फिर जो एंट्रीज लिखनी है वो फायर होने के बाद T1 के पास से टोकन आ जाएगा और कहीं से कंज्यूम नहीं होगा, आउटसाइड वर्ल्ड से कंज्यूम होगा। तो when you write the first column, you assume T1 T1 is enabled. When you write the second column, आप ये नहीं देखते कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आप समझते हैं आपने दोबारा से स्टार्ट कर दिया। इसको भूल जाना है, क्या हुआ था पहले सब भूल जाना है। आपने आपने ये ज्यूम करना है T2 enabled है। T2 कब enabled होगा? ऐसे। फिर क्या होगा? ठीक है। When you write the first column, you forget everything. भूल जाना है सब कुछ पुराना। आपने ये ज्यूम करना है कि T2 enabled है। Assume you write the second column, you assume T2 is enabled, and you forget everything else. You forget everything else. फर्स्ट कॉलम लिखा था तो क्या हुआ था? भूल जाना है उसको। तो फर्स्ट कॉलम लिखा हुआ था, भूल जाए। P2 लिखें, लिखें तो आप ये assume करें कि T2 enabled है। उससे पहले क्या हुआ था फर्स्ट कॉलम लिखते हुए? आपने भूल जाना है, कुछ याद नहीं रहा, समझे आपको डिमेंशिया हो गया, आप भूल गए क्या होगा। तो आप थर्ड कॉलम लिखें, तो आप थर्ड कॉलम लिखें तो आप assume करें कि T3 enabled है। उससे पहले क्या हुआ था फर्स्ट और सेकंड कॉलम लिखते हुए? आप भूल जाएं, आप समझे, पता नहीं क्या हुआ था, मुझे याद ही नहीं है। ठीक है, Get everything। ये इसके लिखने का स्टाइल है। आप कॉलम को ये कॉलम लिख रहे होते हैं तो उससे पहले वाले कॉलम्स लिखते हुए स्टेट की मार्किंग क्या थी अब भूल जाते हैं, कहते हैं मुझे याद ही नहीं है क्या थी। भूल जाना ही बेहतर है, अब भूल जाना ही बेहतर है। हो गया। तो when you write the third column, assume T3 is enabled। जो कॉलम लिखते हैं आप समझते हैं कि वो enabled है। बाकी क्या हुआ था पिछला कॉलम लिखते हुए आप समझे आपको भूलने की बीमारी है, आप भूल गए। ठीक है जी। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रीचेबिलिटी। रीचेबिलिटी रीचेबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी नेटवर्क के डिफरेंट स्टेट्स हो सकते हैं। रीचेबिलिटी, रीचेबिलिटी का वर्ड निकला है रीच करने से, टू रीच। अच्छा, अब एक तो है नेटवर्क, रीचेबिलिटी का मतलब है टू रीच। एक है हमारे पास पेट्री नेट, जिसके अंदर हमारे पास प्लेसेस प्लेसेस हैं, ट्रांजिशंस हैं और ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। एक हमारे पास मार्किंग्स हैं, मार्किंग्स मतलब स्टेट्स, स्टेट्स हैं, मार्किंग्स हैं, स्टेट्स हैं। अगर हम किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना चाहें या तीसरी स्टेट में जाना चाहें, जिस स्टेट में किसी एक नेटवर्क की कितनी स्टेट्स हो सकती हैं? हो सकता है थोड़ी सी हो, किसी नेटवर्क में थोड़ी सी हो सकता है किसी नेटवर्क में स्टेट्स काफी ज्यादा हो। तो अगर हम मार्किंग्स को ऐसे करके, ऐसे करके मार्किंग जीरो, तो एक मार्किंग दूसरी मार्किंग से रीचेबल थी या नहीं, ऐसे करके हो सकता है एक मार्किंग ऐसे। और आप कहेंगे कि M3 is reachable from M0 through M1 and M2, but M0 isn't reachable from M3। M3 से कोई ऐसा एरो नहीं है जो M0 को बोले। ये रीचेबिलिटी है कि थ्रू सम, और ऐसे ही ऐसे क्या होगा कोई ट्रांजिशंस फायर करने से, थ्रू firing, after firing some sequence of transitions, if mi state, is state के mi, ये marking I is reachable, reachable from a marking, ये नेटवर्क की बात नहीं हो रही, मार्किंग्स, another marking mj, another marking mj,
through some sequence of transitions, through some sequence of transitions. उस सीक्वेंस ऑफ ट्रांजिशंस के बाद एक मार्किंग किसी दूसरी मार्किंग के साथ पहुंच जाते हैं आप तो एम आई से एम जे पहुंच जाते हैं एम आई इज रीचेबल फ्रॉम एम जे थ्रू सम सीक्वेंस ऑफ ट्रांजिशंस we state mi is reachable from another marking mj if we can reach if we if we can reach from mi to mj through some sequence of transitions. So we state mi is if we can reach mi from mj through some sequence of transitions. अगर आप ऐसे पहुंच सकते हैं तो फिर कोई मार्किंग दूसरी मार्किंग के साथ रीचेबल है जिसे मैंने अभी ऐसे करके एक मार्किंग एम जीरो थी एक मार्किंग एम वन थी और अगर ऐसे था तो आप कहते हैं कि एम जीरो is m1 is accessible from m0 and m0 is also accessible from m1 अगर एक मार्किंग m2 ऐसी होती तो आप कहते थे कि m2 is accessible from m0 through m1 but m0 isn't accessible from m2 anyway, isn't accessible through any sequence of transitions. We cannot go from m2 to m0. However, we can go from m1 to m0 and we can go from m0 to m1. We can also go from m0 to m2. But through any sequence of transitions, we cannot go from m2 to m0. So m0 isn't accessible from m2. However, m2 is accessible from m0. ऐसे बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी कैसे बोलते हैं हम देखते हैं कि एक्सेसिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं एक्सेसिबिलिटी और रीचेबिलिटी हम किसी नेटवर्क में कैसे करते हैं और ये नेटवर्क में टोकन्स की रीचेबिलिटी नहीं है बल्कि ये मार्किंग्स की रीचेबिलिटी है तो इसके लिए सबसे आसान सबसे लॉजिकल तरीका है वह रीचेबिलिटी ट्री ट्री मतलब दरख्त रीचेबिलिटी ट्री आसान और सबसे लॉजिकल इतना आसान है कि स्कूल के बच्चे भी ये ट्री बना सकते हैं तो इवन स्कूल स्टूडेंट कैन ड्रॉ दिस ट्री ये इतना आसान होता है रीचेबिलिटी ट्री ऑफ नेटवर्क तो हम सबसे आसान नेटवर्क से स्टार्ट करते हैं एक कन्वेयर बेल्ट और प्रोड्यूसर कन्वेयर बेल्ट और प्रोसेसर वाला जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी स्टार्ट में इसे स्टार्ट करते हैं वहीं आ गए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था दोबारा वहीं आ गए आपको बताने के लिए ठीक हो गया तो रीचेबिलिटी ट्री के लिए जब आप रीचेबिलिटी ट्री ड्रॉ करते हैं तो आपके लिए मार्किंग इम्पोर्टेंट है आई एम ड्रॉ करने के लिए इंसिडेंस मैट्रिक या स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स ड्रॉ करने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होने क्या बात उसको भूल जाते हैं लेकिन आर टी यानी रीचेबिलिटी ट्री ड्रॉ करने के लिए मार्किंग का चलना इनिशियल मार्किंग and not is mandatory very important is required आई एम के लिए कोई मार्किंग रिक्वायर्ड नहीं होती जब हम ड्रॉ करते हैं हम मार्किंग से भूल जाते हैं जब एक कॉलम लिखते हैं तो आप पहले क्या हुआ था भूल जाते हैं तो लेकिन जब आप रीचेबिलिटी ट्री ड्रॉ करेंगे तो फिर आपके लिए मार्किंग इंपॉर्टेंट है स्टार्ट फ्रॉम सम इनिशियल मार्किंग m0 फॉर एग्जांपल m0 मैं कहता हूँ ये m0 ठीक है m0 मैं आपकी इजाजत से इसको एक रो वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया
पहले मैंने इसे कॉलम के फॉर्म में लिखा था जब हम एक गिवन मार्किंग एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स हम नेक्स्ट मार्किंग फाइंड करने वाला था। तो अब मैं इसको कॉलम रो वेक्टर की फॉर्म में लिख देता हूँ। अगर हमें यहाँ पर लिखना 10 10 मतलब प्लेस पी वन है और ये प्लेस पी टू। तो प्लेस पी वन के पास एक टोकन है, प्लेस पी टू के पास कोई टोकन नहीं है। अगर हम ट्री कैसे बनता है, ट्री बनाना है ना, रीचेबिलिटी ट्री। तो ट्री कैसे बनेगा? we fire transition T1 and if we fire transition T2, क्या होता है? Given this marking, we can only fire transition T1, and if we fire transition T1, the token is received here and it is consumed from place P1, giving it another marking 0, 1, and we cannot fire T2. Given this state 1, 0, we cannot fire T2 because T2 isn't enabled. तो आप चाहें तो इसको क्रॉस कर दें आगे, चाहे तो आप इसको लिखेंगे। तो now we are at this state 0, 1. यहाँ एक तो करने जाना नहीं है। तो now T2 is only T2 is enabled. T1 isn't enabled तो लिखने की जरूरत नहीं है। T2. And if we fire T2, token is received here. It is consumed from here, giving it okay 1, 0. This 1, 0 is the same as this 1, 0. This is M0. This is also M0. Let's call this a difference marking. We can call it as M1. So now we have three markings. In fact, we have two unique markings, M0 and M1. और इसके बाद अगर आप if you fire T1 now, we reach to 0, 1 and 1. It keeps on going. तो आगे जाना बेवकूफ़ी होगी, हम क्यों जाएं जबकि हम स्विच करते रहेंगे बिटवीन M0 एंड M1। तो क्या करें? Now we are ready. Now we are ready to draw our reachability graph. So from this reachability tree, we draw a reachability graph. Reachability graph is the second step. Reachability tree is step number 1. So given, मैं दोबारा repeat कर देता हूँ, given a tree net, we draw a reachability tree first, and then we draw the reachability graph. So to draw reachability tree, we must have the initial marking. M not, it's mandatory. It's not like I am. While we were writing contents of I am, we neglected any initial state or initial marking. But here we require M not. It's mandatory. We require it. So starting from M not, we see which of the given transitions of the available transitions can be fired. They are enabled. So given this M0, T1 is enabled, and if at T1 we reach to this marking, the token is received here and is consumed from here. So we get M1, the new marking here. And once we have this marking, this token here, and we don't have a token here, and then only we can fire T2. And if we fire T2, we reach to the state we started with, this one. M0. And after M0, if in M0, we know T1 is open. If we that, we reach to this state 0, 1, M2, and we keep on going. So we should stop here and now we should draw reachability graph RG. So is the time we can draw reachability graph RG and can find out the two out of the two unique markings that we have here, whether they are reachable from each other or not. Let's see. Right, we only have two unique markings, and when we keep on switching between the two, we can draw a graph like this, M0, and the other marking, this is M1. So we go from M0 to M1 by firing transition T1, and we come back to M0 if we fire T2 while being at M1 marking. So this is how we have drawn a graph, and this graph gives us some useful information about the reachability of states from each other.
Reachability of the states is we can go from this graph, reachability graph. This RG tells us some useful information about the states or the markings of this given Petri net. RG tells us some useful information, some useful information about whether about number one, the unique the unique number of markings, the unique number of markings or the unique number of markings or states in a battery net, markings or state in a given battery net. ठीक है, कितनी आपके पास है यूनिक number of markings or states in this battery net? We only have two markings, two unique markings. और number two information क्या दे रहा है आपको? It's gonna tell you that which two markings and marking states, which two markings are reachable from each other. Which two markings are reachable from each other? Reachability of states. So it's a good starting example, and now we are going to we're going to solve another example that is about a rewrite system. For example, we have a computer system writing on a database. Database है a computer the computer is writing on some hard disk, for example. So the given computer system can either or 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 either write or read. So read or write system. So given a system, it can read or write. It can read and write only, but it can perform only one operation at a time. It can either read or write. The system cannot read or write at the same time. So here's your computer. Here's your database. ठीक है, यहाँ पे बिलिंग की database है. This is your workers billing data. Computer system है. Computer system is accessing this database such that your computer this is your terminal computer. जिससे आप consumers को bill निकाल के दे रहे हैं. This is your terminal computer. और क्या आपके पास एक database है. इसमें से आपके पास कुछ information है. You can either write some information on it or you can read it, but you cannot do the same two operations at the same time. मतलब ये एक physical problem है. You have to model this using using a battery net. Using a battery net. Okay. So either can be this database can either be written or it is being written or it is being read or it is idle. So this database can either be it can be in one of the three states. This database can be in this database of your billing database can either be database can be number one being read
read, written, or number three, the base can be idle. It's not either it is not being written or it's not being read. So it can be idle. So how would you draw a Petri net model this to model this operation, or model this process? Right. Suppose we have this place that corresponds to for example reading, and I also call it P1 because I use this nomenclature P1. And I have another place I call it W stands for write, and I'll give it the name P2 because I'm using this nomenclature P1 and P2. And I have another place that is idle, but I'll give it another name P3 to be consistent with my nomenclature. So we have P1, P2, and P3, three states, and we have given them names R, W, and I. Read, write, and idle. So if suppose we start in the morning and this database hasn't been accessed since morning, and you are the one accessing it for the first time, what you will do is you will file a transition and will go. Suppose you want to read it, so you will file a transition T1 and you would like to go to the read operation, or you will like to go to the place P1. But for that, you have to have a token. So suppose you start your database and you have a token in the idle state. You have a token in the ideal place, in the idle place because the database is idle right now. You haven't performed any operation. So So when you start your computer in the morning, there is one other state, there is one other transition that is enabled, and we call it T2, and that this transition T2 is also enabled. Why is this enabled? Well, this is enabled because starting from the idle place in the morning, you can perform either the write operation as the first operation, or the read operation can be your first operation, or write can be your first operation. So you can go anywhere. If you fire T1, you go to read. This token is moved to this place, and then you cannot, of course, you cannot write because after you have fired T1 and your token is here. For example, you start in the morning and you come here, you write and you fire this transition T1, the token is moved here. Now you have a token in the read place, but you don't have a token in the idle place. And suppose you want to write at the same time, you cannot because this transition T2 is no more enabled. T2 isn't enabled because you have a token. So to enable to fire T2, you must have a token here. But unfortunately, or fortunately, you you fire this transition T1 first. You fire this transition T1 first and move your token to the read place. So now you cannot write, of course, but you can write once the read operation is over. You can write once this read operation is over. So to model that, we must have another transition, let's call it 3 here, and this should lead to the idle place once again. This shows that if the read operation, as soon as the read operation is complete, T3 will be fired and your token will move back to the idle place. This means the read operation is complete now, and now T2 can fire and you can go to the write operation. But once suppose you have fired T2 and token is here, and now you want to perform this read operation, you cannot because this token isn't here, T1 isn't enabled. For that, you have to have this token here, but for that, this write operation must be complete. And as soon as this operation is complete, this will go back to the idle place by firing another transition. Let's name it T4. Right, so now we have this transition T4 fired as soon as the write operation is complete, and if T4 fires, this token is moved from this place to, to the idle place once again.
to this idle place falsity. So this is how the whole stuff works. You go to read, and when you are reading, you cannot go back. Once you are reading, you cannot write unless you go back. T3 is fired. Go back. The token is here. Once the token is here, now you can perform either read or write operation. If T1 fires, you go to read again. If T1 is fired, you go to the write operation. And once you are there, you can go back by firing T4, and then you come to idle. So idle. Don't spoil my wall. Okay. So, next is how to write an incidence matrix for this. Or of course, you can write incidence matrix. If you write incidence matrix, you don't have to care about the marking, initial or final. So let's first of all forget everything, every token, and write I am the incidence matrix for this PN battery net. I am क्या होगा जी? I am is right. We have places P1, P2, and P3, three places, and four transitions T1, T2, T3, and T4. Let's write this P1 in a bit lower so that we can write this first, this line T1 to T4. And now we are ready to fill the first column, that is T1. So if you fire T1, no matter what has happened before, just forget about the past. You are going to fire T1 and you assume T1 to be enabled, right? So enabled, you fire this T1 and you consume one token from P3, consume one token from P3, and you add one token to P1. As soon as this fire, this token is transferred here. So you add one token to P1. And P2 remains independent. So if T2 is fired, if T2 is fired, assuming you'll forget everything what has happened before. Forget everything that was past. Forget it. Now you're going to start a new world, T2. You will fire T2. This means T2 is enabled. You will presume that T2 is enabled. Right. You'll presume that T2 is enabled. Token is here. And if you fire T2, a token is consumed from P3 and is added to P2, and P1 remains independent. P1 remains independent right now. Now T3. So just forget about the past. That was past, and I don't like my past. P3, T3. Fire T3. You forget everything that has happened before T3. T3 is enabled. This T3 is enabled, and T3. Once you fire T3, a token is consumed from P1 minus 1 and is added to P3 plus 1, and P2 remains independent. And once T4 is fired, a token is consumed from P2, is added to P3, and P1 remains independent. So this is your incidence matrix, and you can use this incidence matrix to find any new marking given initial marking. But while writing the contents of this I am the incidence matrix, you don't care about any conditions. You start your new word with each column. Right. So now we are ready to draw. Now we are ready to draw the reachability tree and reachability graph for this read-write problem, for this famous read-write problem. Right. So read-write problem. So how do you start drawing your reachability tree? And actually, we have already mentioned that in order to start drawing reachability tree RT, you must have some initial marking. For IAM, you don't, but for T reachability tree, you need an initial marking M0. Suppose I'm giving this M0.
Since I'm not going to use this incidence matrix to figure out any new places, so I'm gonna erase it because there's a shortage of space here. The kid is also walking. She also needs some space. Right. So art here, reachability tree. For that, we must have the first marking and zero the initial marking. Let's see. We're doing this initial marking. Yeah, I started the network in the morning. I started the network in the morning and I started with idle place. Of course, I have to because I haven't written anything and I haven't read anything yet. So we'll start with the idle position I. P3 is having a token, whereas P1 and P2 they don't. Right. So now we have this P3 with a token, P1, P2 are without any tokens. So and we have to see which two or three transitions are enabled. So if you have a token here in P3, T1 is enabled, T2 is also enabled. So that's T1, T1 here and T2 here. So T1 is enabled means, what are you doing, Afra? Go out. Right. So T1 is enabled. This means T1 is enabled, and if T1 is fired, we get a new mark. Yeah. Now we have here. So 100 is your new marking. 100 is your new mark. If T2 is fired, let's go back to the place M0 marking. Starting from M0 marking, if T2 is fired, the token is moved here, and now we have 0, 1, 0. 0, 1, 0 as our new marking. So this is M0. Since this is different from 0, 0, 1, this is 1, 0, 0. I'm going to assign it another name M1. And the 0, 1, 0 is different from these two. So let's call it M2. So I'll assign names. So logical names to these states or markings. So now we are at 1, 0, 0. 1, 0, 0. So let's see which two transitions or one transition is enabled. If we have a token here, 1, 0, 0, we have only one transition T3 enabled, no other. So we have only one transition T3 enabled. And if you fire that transition T3, the token is moved to P3. So this becomes 0, 0, 1. Right. So this 0, 0, 1 isn't unique marking or a unique state because this is the state we started our process with. So let's call it M0. Oh, we have to call it M0 because M0 is the same as this. So we're bound to M0. Right. And after that, we don't have to go further. Don't go further because we have a repeating state here. Don't go further because we have repeated. Because we have repeated. Don't go any further. Why? Under this, under this marking, we don't have to go any further because why? Because we repeated a state. We got a repeated state marking. Since we got a repeated marking or repeated state, we don't have to go any further. Stop here. Let's stop here. And of course, from this M2, we can go further because 0, 1, 0. This means if we are at this state or marking 0, 1, 0, we have this T4 and only one T4. No other transition. Only T4 is enabled.
So if P4 is enabled and file that, we move over to P3 once again, and the new marking is 001, which is M0. So, and we, of course, we stop here because we have repeated a state. So this means we have only how many unique states? M0, M1, and M2, and then we have repeated those states. So given this Petri, we can draw, we have drawn this RT, the reachability tree, and finally we are going to draw the reachability graph. This one, the reachability graph, this one. RT, which is simple, RT, a very simple reachability graph for this given Petri net that I have just erased. M0 is the starting marking, and then I can go to M1, can go to M1, subscript 1, and from M0, I can go to M2. But these are three unique states, three unique markings. So from M0, I can go to M1 by firing T1. From M0, I can go to M2 by firing T2. And once I'm at M1, I can go back to M0 by firing T3. And from M1, from M1, I can go back to from M1, I can go back to M0 by firing T3, and from M2, I can go back to M0 by firing T4. So this is how we draw RG, the reachability graph, with three unique markings. And we conclude that every marking is accessible or reachable from every other marking. So in this case, it's not the case always. It's not always the case, but in this case only, in this case, every marking is accessible from every other marking, but only in this case. Not it's not true for every given battery net. Accessible from every other marking. So MI is reachable from any given MJ only for this battery net. So we have to solve some other examples too, but I think the time is over and we have to start the third session, the simulation session, which will start after 10 minutes. So we'll stop here and I'll be back with a new link after 10 minutes with some interesting Python simulations. Thank you.